Hello everyone, welcome back to my channel A Square Academy. After is a question, practical question we see, and it is having two tables, person with the attributes and area with the attributes. And here it is written what? An area can have one or more person living in it, but a person belongs to exactly one area. And the attribute area underscore type can have values as either urban or rural. We have to assume appropriate data types for all the attributes. Okay, that means what? We have to create the tables with proper relationship so that a table is in a normalized form, and we have to use proper constraints while creating the table. So basically first understand what is the relationship between these two entity set, the person and the area. Here it is telling what? An area can have one or more person living in it. That means what? एक area में there can be multiple person living, right? Obviously, if I talk about Hadapsar area, then in this Hadapsar there are many people living, right? That means what? One area, many person. One area, many person. Since how it is given over here, person is the first table and the area is the second table. The person is the many table and area is the one table. Always remember, while creating the table in one to many relationship and many to one relationship, always the table which is one will be created first. तो हियर पर्सन कौन सा टेबल है आपका? मैनी का टेबल है, और एरिया कौन सा टेबल है आपका? वन का टेबल है. तो हमेशा याद रखना, जो टेबल वन का है वो टेबल आपका पहले क्रिएट होगा. तो लेट्स स्टार्ट. हम बनाएंगे अभी एरिया का टेबल. कौन सा टेबल बनाएंगे? एरिया का टेबल. ओके, सो हियर यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट मैंने क्या लिखा है? क्रिएट कमांड से, बिकॉज क्रिएट कमांड से ही हम लोग टेबल बनाने वाले हैं. Create table area, this is the table name, okay, with the attributes like area name, that is a name, varchar 100, primary key constant, area underscore type, the data type and the size. Check constant I have used since it is telling what? आपका जो area type है वो सिर्फ दो ही वैल्यू ले सकता है, या तो रूरल और दूसरा है अर्बन. ओके, तो दैट्स वाई हियर चेक कांस्टेंट हमने लिखा है. इसके अलावा ये दोनों वैल्यू के अलावा तीसरी कोई भी वैल्यू ये पर्टिकुलर कॉलम में नहीं जाएगी. ओके, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द एरिया टेबल, राइट. प्रैक्टिस अलोंग विथ मी. जैसे मैंने लिखा है यू हैव टू टाइप इट एज इट इज, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द कॉन्सेप्ट, राइट. तो सी हियर क्रिएट टेबल लिखकर आया, मतलब देर इज नो एरर इन दिस command. Okay, now next table, which is the next table? The person is the next table, right? So this is the second table. You can see create table person with the attributes like p number, int primary key, p name varchar 20, birth date, the data type for it is date, income I have taken as int, e name varchar 100, the size. Okay, then foreign key, since what I am taking a name, the primary key of the first table, that is area table, I have taken as the foreign key, where in the person table, so area is one and person is many. Okay, so this is how you are going to take the primary key as the foreign key into the person table. Okay, foreign key references, pronounce in the same way how I am pronouncing references, then only there will be no mistake while typing. Okay, this is the area table, a name, on delete cascade, on update cascade, right. So this is how you are going to create one to many relationship or many to one relationship. The table which is one will be created first and the table which is many will be created afterwards, right. So this is how the two tables have created. If create statement is coming, create table is coming here like this, then there is no error into the create table command. So now we are going to insert the values. We have to insert proper values in both the tables so that our queries are matched. Okay, we can fire the query exactly. So see here, I have inserted the records, 5 records in this table. Okay, insert into area values, Hadapsar, ruler,
camp, rural, Keshav Nagar, urban, Urli, urban, Yeroda, urban. Okay, this is how I have inserted 5 records into my area table. Since area type is not going to take other than rural and urban, so here we cannot insert the third record, right? Yeah, third value for other than urban or rural. Hadapsar, Camp, Keshav Nagar, these are nothing but the area name, and we have taken this as the primary key. So remember, primary key is never duplicated. Always the unique value is there for the primary key. Right, now let's insert in the percent table. Now this is how I have inserted the values in the percent table. Okay, here you can see Hadapsar is nothing but the foreign value in the percent table. Okay, 101 the primary value, and this 101, 102, 103, these values are never repeated. Okay, since it is the primary key, so this is how you are going to insert the values into your percent table. Try while you are watching this video, then only you are going to get the concept. Okay, do learn the syntax of insert command, learn the syntax of create command. Okay, then only your practical concepts will be clear while doing it practically, right? Now let's fire the queries. Okay, let's understand what all are the queries over here. So here you can see this is what the queries are. Okay, so basically here you can see list all people area wise living in rural area type. Okay, always remember whenever the question is coming like area wise, owner wise, then obviously the group by clause is going to come. Which clause is going to come? Group by clause is going to come. Do not forget वाइस वाले क्वेश्चन में हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज आएगा. तो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट. लिस्ट ऑल पीपल एरिया वाइज लिविंग इन रूरल एरिया टाइप. लिविंग इन रूरल एरिया टाइप. तो हमें क्वेश्चन को समझना है. पहले तो हमें देखना है कि कितने टेबल्स इसके लिए लग रहे हैं. ठीक है, कितने टेबल्स इसके लिए लग रहे हैं. राइट, हमें पीपल की डिटेल्स कहाँ पे मिलेगी? पर्सन के टेबल के अंदर. ठीक है, एरिया की डिटेल्स कहाँ पे मिलेगी? एरिया के टेबल में. राइट, तो कितने टेबल्स लग रहे हैं हमको यहाँ पे? 2 टेबल लग रहे हैं. ठीक है, कितने टेबल्स लग रहे हैं? 2 टेबल. सिंस एरिया टाइप इज प्रेजेंट इनटू द एरिया का टेबल. ठीक है, एरिया टाइप कहाँ पे प्रेजेंट है? एरिया के टेबल में. राइट, तो हमें कितने टेबल्स लग रहे हैं यहाँ पे? 2 टेबल लग रहे हैं. तो वी हैव टू फाइंड द क्वेरी अकॉर्डिंगली. एरिया वाइज है तो हमें क्या लगेगा? ग्रुप बाय क्लॉज लगेगा. ठीक है, एंड हमें क्या डिस्प्ले करना है? हमें पर्सन के नाम डिस्प्ले करना है. हमें क्या करना है? पर्सन के नाम डिस्प्ले करना है एरिया वाइज. हमें क्या करना है? पर्सन के नाम डिस्प्ले करना है एरिया वाइज. लेट्स फाइंड दिस क्वेरी. हम यहाँ पे लिखते हैं. ओके, पहले तो देख लो हमारे टेबल्स में वैल्यूज क्या क्या प्रेजेंट है. हमने किया सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एरिया, तो हमें ये वैल्यूज मिले हैं जिसमें यू कैन सी हड़पसर रूरल, कैंप रूरल. ओके, उसके बाद में केशव नगर इज अर्बन, उर्ली अर्बन, येरोडा अर्बन. Likewise here also in select start from person you can see these are the records of the tuples 101 Sumayya, and these are the birth date, income and area name. Okay, area name you can see Hadapsar is coming twice, Camp is coming 3 and Urli is coming only single time. So what is the case over here? Like we have to display the person name area wise. So Hadapsar wise we have to display the person. Camp wise we have to display the person. Urli wise we have to display the person. So likewise we are going to find the query over here. Okay, let's see how to find the query now. So here you can see I have written the query over here. Select P name, since we want the person name, right? P name, area dot a name. ठीक है, area dot a name. This area is nothing but the table name dot a name. We are fetching the attribute of the table area. From what comes under from? From में आते हैं टेबल के नाम. Where में आती है कंडीशन, मैपिंग कंडीशन और जो भी कंडीशन दी है. राइट, मैपिंग कंडीशन आ गई. एरिया डॉट ए नेम इज इक्वल्स टू पर्सन डॉट ए नेम. दिस इज द प्राइमरी की एंड दिस इज द फॉरेन की. ओके, तो here this is what the mapping condition is. Area dot a name is equals to person dot a name, and in the question it is asked what area type must be rural, and since it is area wise so we need to group by area name,
and p name is what we have written in the select statement. That's why it is compulsory to write it over here. So this is how the first query will be executed. Okay, the first question is nothing but we have to find person name एरिया वाइज. ओके, तो वी एरिया वाइज क्वेश्चन आया, इसीलिए हम लोग ने लिखा है ग्रुप बाय. लेट्स रन दिस पर्टिकुलर क्वेरी. सी, दिस इज हाउ इट हैज कम. ओके, एरिया वाइज इट हैज गिवन द person name. Basically here in this particular query we are grouping it by p name and a name. Okay, p name and a name, both p name and a name. So basically this question is according to p name and a name wise, right? So this is how it will be executed. Let's see what is the next question. Next question is what? Find the count of people area wise. Understand the question. Find the count of people area wise. Okay, so here we need to count the people area wise. Like in Hadapsar, how many people are living? In camp, how many people are living? Okay, so first understand how many tables do we need here. Okay, person is in the person table, peoples are in the person table, right? Again we can take area name, right? Area name we can take from the person table itself, right? Since person is having the attribute a name which is the primary key of the area table, तो काम बन जाएगा एक टेबल से. अगर दोनों लेना है तो यू कैन टेक टू टेबल्स, अगर एक लेना है तो यू कैन डू इट विद द सिंगल टेबल. लेट्स रन दिस पर्टिकुलर क्वेरी. ओके, so here you can see I have written this particular query. Select area dot a name comma count p number. Okay, I have made use of two tables from person comma area, where area dot a name is equals to person dot a name group by area dot a name. Okay, we need to count the number of person staying at particular area. Okay, तो बेसिकली हड़पसर में कितने रह रहे हैं, कैंप में कितने रह रहे हैं. तो दिस इज व्हाट वी कैन डू विद दिस पर्टिकुलर क्वेरी. ओके, लेट्स एंटर दिस. तो हियर सी दिस इज हाउ द काउंट इज. उर्ली में द नंबर ऑफ पर्सन इज व्हाट 1, कैंप में द नंबर ऑफ पर्सन इज 2, हड़पसर में द नंबर ऑफ पर्सन इज 1. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस query. We are counting the number of person staying at particular area. So definitely we are making use of group by clause. Okay, we are making use of group by clause. Now let's see what is the third query. Find average income of people living in urban area. Okay, find average income of people living in urban area. Average income निकालना है. फिर से हमें एग्रीगेट फंक्शन लगने वाला है. एग्रीगेट फंक्शन कौन सा? AVG. दिस इज व्हाट द एग्रीगेट फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द एवरेज. ओके, एंड वी हाउ मेनी टेबल्स आर नीडेड हो हियर. सी, अर्बन. अर्बन कहाँ पर है? एरिया टाइप में. एरिया टाइप कहाँ पर है? एरिया में. तो बेसिकली एरिया का टेबल हमें लगने वाला है. इनकम ऑफ पीपल, इनकम कहाँ पर है? पर्सन के टेबल में. तो कितने टेबल लगने वाले? 2 टेबल फिर से हमें यहाँ पे लगने वाले हैं, राइट? लेट्स रन दिस पर्टिकुलर. Okay, so see, this is how we are going to write this query. Select AVG. AVG function is to calculate the average. Okay, average value. Select AVG, bracket में आप लिख रहे हो income from person area, where area dot a name is equal to person dot a name. Area dot a name is equal to person dot a name is nothing but the mapping condition. Okay, and it is telling what the area type must be urban. So this is what the query is. Select AVG, income from person area, where area dot a name is equals to person dot a name and area type is equals to urban. सिंपल है, समझना आपकी जिम्मेदारी है और समझाना मेरी जिम्मेदारी है. ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे. तो दिस इज व्हाट यू कैन सी, द एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन स्टेइंग एट अर्बन एरिया इज नथिंग बट 60,000. ठीक है, अर्बन एरिया का क्या है? 60,000. वेट, देखो वो जो क्वेरी है उसको समझने के लिए यहाँ पे देखो एरिया का टेबल यू कैन सी. दिस इज द एरिया टेबल, राइट? दिस इज व्हाट द एरिया टेबल इज, राइट? दिस इज व्हाट द एरिया टेबल इज. You can see urban Keshav Nagar is of area type urban and Urli is
area type is what? Urban, and Yeroda is what? Urban. ठीक है. And here in the person table you can see income. This is what? Urli, right? And you can see Keshav Nagar. Okay, these two are taken over here. This is how the value for Urli and Keshav Nagar is taken into my person table. So here what will be the average? It is nothing but 10,000 plus 6,000 divided by 2, since only two entries are there of the area type urban. Okay, 60,000 and this is what? 10,000. So 60,000 plus 10,000 divided by 2, we are going to 10. Whatever the value is coming, it will be the average. Let's fire that particular query again. Okay, just copy it from here. Okay, I'll write it below here. Select, okay, select average, AVG, round bracket, income, okay, income attribute, income, bracket close, from area, comma, person, okay, person, where, WHERE, where area dot a name is equals to person dot a name, right? And area underscore type is equals to, which is it? Urban, right? Urban, bracket close and semicolon. So this is how you can get the average of the person who stays in the urban area. So it is nothing but 35,000. Okay, 35,000. So this is how that particular query will be executed. Now let's see which is the next one. So here alter table area to add area price with appropriate attribute. So basically alter table, and it is telling us to add area price column. Okay, we need to add the attribute area price. So for this we need to use alter command. We need to use alter command. Let's do this also. So see, this is how we are going to do this. Okay, alter table area, add area underscore price, and the data type for it is nothing but money. Alter command is used to modify the structure of the table. Since we are adding the column, so definitely it is altering the structure of your table, and the name for that particular column is area underscore price, and the data type is what? Money. So see, alter table command has come. Let's select that particular table. Select star from area underscore price. Enter. Sorry, area we need to write, है ना? Okay, so this is how the column have been added. Now let's see what is the last query. Delete people staying in rural area and having income less than rupees 50,000. Okay, understand the question over here. We need to delete the people who stay in rural area. Okay, rural area will come from the area type, and it is present into the area table. And having income less than rupees 50,000. The income is where? In the person table. We need two tables over here. Now let's see how we are going to fire this particular query. Students, first understand the concept over here. We need to delete that particular person whose area type is rural and having income less than 40,000. Okay, so basically see, you can see over here, from person you can understand, and this is what the area table is. Hadapsar is the rural area. Let's see that particular person. So here in the person table you can see 101 Sumaya is having the income 40,000, and the area name is what? Hadapsar. So basically this particular tuple must be deleted. This particular tuple must be deleted. Okay, for that reason we are, as I said, we need to delete that particular person whose area type is rural and the income is what? Less than 50,000. To understand, see, try to read this table carefully. Here you can see the area. See this area table, you can see this is what the area table is. Okay, rural area, रूलर इज़ व्हाट? कैंप. रूलर इज़ व्हाट? हड़पसर. ओके, ये तो समझ में आ गया. रूलर क्या है आपका? कैंप. हमारी क्वेरी में वही है, एरिया टाइप होना चाहिए रूलर. ओके, रूलर है कैंप एंड रूलर है हड़पसर. अब पर्सन के टेबल में आओ.
ऐसा कौन सा पर्सन है जो रूरल एरिया में रह रहा है और जिसकी इनकम लेस देन 50,000 है. लेट्स सी दिस एरिया टेबल. ओके, ये एरिया टेबल है आपके पास में. तो देखते हैं इसमें कैंप 2 बार आ रहा है. बराबर, कैंप आपका क्या है, रूरल एरिया, लेकिन इनकम क्या है 60,000. ओके, उसके बाद देखो हड़पसर आया है. देखो इसकी इनकम कितनी है 40,000 है, तो उसका इनकम लेस देन 50,000 है. तो ये पर्टिकुलर टपल आपका डिलीट होना चाहिए. 101 सुमैया, दिस इज व्हाट द बर्थ डेट, इनकम इज 40,000 एंड ए नेम इज व्हाट हड़पसर. ये टपल ये पर्सन टेबल में से जाना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग क्वेरी लिख रहे हैं. ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेरी लिख रहे हैं. तो कैसी क्वेरी लिख रहे हैं, देखो हमारे पास डिलीट कमांड है. कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हमारे पास डिलीट कमांड है. तो डिलीट फ्रॉम पर्सन. ओके, पर्सन के टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट होना है. सिंस क्वेरी क्वेश्चन ही आपका क्या है, वी नीड टू डिलीट. देखो डिलीट पीपल, वो पीपल का रिकॉर्ड डिलीट करना है जो रूरल एरिया में रह रहा है और जिसकी इनकम क्या है 50,000 है, लेस देन 50,000 है. तो ये पर्सन को हमें डिलीट करना है. तो डेफिनेटली क्वेरी किसके ऊपर फायर होगी, डिलीट फ्रॉम पर्सन. ओके, वेयर इनकम कौन से टेबल में है, पर्सन के टेबल में. वेयर इनकम इज लेस देन 50,000 एंड द सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, ए नेम क्या है, पर्सन के टेबल में ए नेम फॉरेन की है. बराबर, तो डेफिनेटली हमें कोई मसला नहीं होगा, हमने यहाँ पे ए नेम लिखा तो राइट. ए नेम इन डाल रहे हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर. फिर नेस्टेड क्वेरी लगा रहे. सिलेक्ट ए नेम फ्रॉम एरिया. अब एरिया का टेबल आया है. वेयर एरिया अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल्स टू रूरल. हमेशा याद रखो जब भी हम लोग नेस्टेड क्वेरी की बात करते हैं तो ये है इनर क्वेरी. ये कौन सी क्वेरी है, यहाँ से जो भी शुरू हो रही है वो कौन सी क्वेरी है, इनर क्वेरी. इसका जो भी आउटपुट मिलता है वो आपके आउटर क्वेरी को दी जाती है, वो आपके आउटर क्वेरी को दी जाती है. और ये आपका है आउटर क्वेरी. इनर क्वेरी कौन सा है आपका, ये आपका इनर क्वेरी है. ठीक है, तो बेसिकली सिलेक्ट ए नेम फ्रॉम एरिया वेर एरिया टाइप इज इक्वल टू रूरल. इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या होगा, वो आउटपुट होगा सुमैया. वो आउटपुट क्या होगा, सुमैया. ठीक है, वो आउटपुट किसको दिया जाएगा, वो आउटपुट आपके ये एट्रीब्यूट को दिया जाएगा, ए नेम इज इक्वल्स टू सुमैया. अब आपकी क्वेरी कैसी होगी, डिलीट फ्रॉम पर्सन वेर इनकम लेस देन 50,000 एंड ए नेम इज इक्वल्स टू a name is equals to एक मिनट, a name is equals to what, here the a name is what, Hadapsar. Sorry guys, तो basically see over here, a name in select a name from area where area type is equals to ruler. तो basically यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका हड़पसर. वो क्या होगा, हड़पसर, राइट. वो होगा आपका हड़पसर एंड कैंप. दो वैल्यूज जाएंगे किसके लिए, ए नेम के लिए. तो वो चेक करता रहेगा ए नेम इन कैंप है क्या, ऐसा कोई पर्सन है क्या जिसकी इनकम लेस देन 50,000 है. अगर है तो वो वैल्यू डिलीट कर देगा. अगर नहीं है तो सेकेंड वैल्यू के लिए जाएगा. कौन सी सेकेंड वैल्यू है, हड़पसर के लिए. तो एरिया नेम इज इक्वल टू हड़पसर. तो आपकी क्वेरी कैसी बनेगी फिर, डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर इनकम इज लेस देन 50,000 एंड ए नेम इज इक्वल्स टू हड़पसर एंड ए नेम इज इक्वल्स टू व्हाट, हड़पसर. तो ये आपकी क्वेरी हो जाएगी. समझ रहे हैं आप, ठीक है. इनर क्वेरी आपको दो वैल्यूज देगी, एक है कैंप और दूसरा है हड़पसर. वो कंडीशन चेक करेगा, कैंप में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम 50,000 है, लेस देन 50,000 है. अगर है तो उसको डिलीट कर देगा, नहीं है तो वो सेकेंड वैल्यू के लिए जाएगा. तो सेकेंड वैल्यू कौन सी मिल रही है, नेम को हड़पसर मिल रही है. समझ रहे हैं आप. तो डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर इनकम लेस देन 50,000 एंड एरिया नेम इज इक्वल टू हड़पसर. लेट्स एंटर दिस. एंटर किया, ठीक है. देखो लिख कर आ गया यहाँ पे डिलीट 1. क्या लिख कर आ गया, डिलीट 1. मतलब एक रिकॉर्ड आपकी डिलीट हो चुकी है. अब देखते हैं कौन सी रिकॉर्ड डिलीट हुई है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम person, select star from person, semicolon and enter. So here you can see 101 is deleted from the person table. 101 is deleted from the person table. So this is how you are going to execute delete command when the question is based on two tables. The question is based on two tables. Okay guys, thank you for watching this video. Again, if you have any doubt, please comment me in the comment section. I will definitely going to clear your doubt. Thank you for watching this video.